Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 31. We were discussing the advanced granulation technology in previous lectures, and we had completed the topic of extrusion and spheronization technique. In today's class and the further two lectures, we would be discussing about the rapid release granulation technology. Let's begin with the introduction. Many potential drug candidates which had been screened to show therapeutic activities could not be formulated into suitable oral dosage forms, which are the most preferred form of drug administration due to poor aqueous solubility. These compounds were abundant during pre-formulation stage because they did not exhibit sufficient solubility in the aqueous environment, implying reduced bioavailability upon administration and the inability to attain the necessary drug levels in the blood for therapeutic effect. Figure depicts the possible events that can occur upon administrating various oral dosage forms, and it is obvious that there are many factors affecting the absorption of the drug. बहुत सारे ड्रग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ के लिए स्क्रीन तो ज़रूर किया गया, लेकिन दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओरल डोजेज फॉर्म बिकॉज उनकी पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी होने की वजह से इन कंपाउंड्स को प्री फॉर्मुलेशन स्टेज में ही अबंडन कर दिया जाता है बिकॉज सफिशेंट सॉल्युबिलिटी एक्वस एनवायरनमेंट में इन कंपाउंड्स की नहीं होती, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड बायोअवेलेबिलिटी होती है अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन और नेसेसरी ब्लड लेवल्स जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए चाहिए, वो ये ड्रग्स अटेन नहीं कर सकती हैं. इस फिगर के अंदर डिफरेंट पॉसिबल इवेंट्स हैं जो कि ओरल डोजेज फॉर्म्स को एडमिनिस्टर करने के बाद अकर होते हैं, लाइक इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ल्यूमेन एंड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन. If a drug is administered in a dosage form type, either capsule or tablet, suspension or powder or syrup, it has to undergo certain effects in the GIT tract. Say for example, if your drug is a capsule or a tablet, it will have to be disintegrated and then disintegrated into granules or aggregates, and the process of dissolution would occur, and then the drug would be available in solution form, and this solution can only be absorbed into the systemic circulation or in blood or body fluids or tissues, whatever the case may be. This is same the case with the suspensions are already available in the form of heterogeneous solution. They are having some particles, granules or aggregates. They would get dissolved and converted into a solution, and then the solution can only be absorbed into the systemic part. Powders are fine particles. They may be deaggregated, they may be dissoluted, and then they would be converted into a solution, and subsequently it would lead to absorption. The only dosage form which is available in a homogeneous solution form is syrups or solutions. They are directly available in solution, so they would actually minimize all these effects that are necessary for powder, suspensions or capsules, so they would directly be absorbed into the blood or the body fluids. So these are the potential events that occur upon administration of oral dosage forms. There are rapid release granulation is expected to benefit the class of compounds where absorption is highly dependent on the dissolution of the drugs in the gastrointestinal tract, termed as class 2 compounds under the biopharmaceutical classification scheme. Rapid release granulation technology उस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बेनिफिट करती है जिनकी एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ ड्रग के ऊपर. ये क्लास 2 कंपाउंड्स में क्लासिफाइड है अंडर BCS क्लासिफिकेशन.
BCS classification ये कहती है कि there are 4 classes of drugs, class 1, class 2, class 3 and class 4. Class 1 have higher solubility and higher permeability, class 2 have low solubility and higher permeability, and class 3 have higher solubility and low permeability, and class 4 is having low solubility as well as low permeability. So the rapid release technology actually deals with the class 2 drugs where the solubility is actually affected by the dissolution kinetics of the drug. There will be some definitions which are going to be utilized in this chapter, so we need to learn those definitions. Solution can be defined as a mixture of at least two components forming a single phase which is homogeneous at the molecular level. The transfer rate of molecules or ions from solid state into solution is known as dissolution rate, and the extent to which this proceeds under a given set of conditions is known as solubility. सॉल्यूशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल फेज़ फॉर्म करता है और मोस्टली होमोजीनियस फेज़ होता है मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर. मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र रेट या आइंस का ट्रांसफ़र रेट सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन रेट कहलाता है. और जिस एक्सटेंट में ये प्रोसीड हो रहा होता है या जिस एक्सटेंट में ये ट्रांसफरेंस हो रही होती है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सो लेट्स रिपीट द डेफिनेशन अगेन. Solution can be defined as a mixture of at least two components forming a single phase which is homogeneous at the molecular level. The transfer rate of molecules or ions to form solid state into solution is known as dissolution rate, and the extent to which this proceeds under a given set of conditions is known as solubility. Thus, the rate of dissolution, that is dissolution rate, and the amount that can be dissolved, solubility, are two separate concepts, but in practice, high solubility is usually associated with high dissolution rate. Let's repeat it again. The rate of solution, which is dissolution rate, and the amount that can be dissolved, that is solubility, are two separate concepts, but in practice, high solubility is usually associated with high dissolution rates. So there are certain factors that affect dissolution rate. Let's discuss those factors. Most of the dosage form related factors are highlighted in figure 2, can be explained by the term in the modified Noyes-Whitney equation. These are the factors. Let's see the factors first and then we'll discuss the Noyes-Whitney equation. There are two types of factors that affect the dissolution rate, specifically the dosage form related factors. One is the formulation related factors and the other one are granulation related factors. The formulation related factors are again subdivided into two kinds, that is, one is the drug related factors and the other one is additives. The drug means the active part of the substance that is present in the formulation, and the additives all the excipients or non-active components. The drug related factors includes the free acid, free basic or salt form of the drug, particle size of the drug, polymorph or solvate or amorphous state of the drug can affect the dissolution rate. As far as the excipients or additives are concerned, the complexic agent, effervescent agents, hydrophilic agents, lubricants, surface active agents and super disintegrants, they all affect the dissolution kinetics of the drug. Granulation factors include the processing factors, basically the granulation process, that is blending the granulating equipment that has been used for granulation, liquid binder, type of binder and the quantity of binder, wet massing and tableting force, which is being utilized for compression of tablets in case of tablet formulations. These all affect the rapid release oral dosage forms that are capsules or tablets. So let's get back to the Noyes-Whitney equation, which is dC over dt is equal to AD Cs minus C over H, where dC over dt is the dissolution rate,
A is the surface area available for dissolution, D is the diffusion coefficient of the compound, Cs minus C is the solubility of the compound in the dissolution medium, and the concentration of the drug in the dissolution medium at time t. So it is actually the difference in the solubility of the compound in the dissolution medium and the concentration of the drug in the dissolution medium. T is the time which determines the rate of dissolution, dc over dt. It is actually the rate of dissolution. And H is the thickness of the diffusion boundary layer adjacent to the surface of the dissolving compound. We have already discussed this equation in the previous chapter, that is of controlled release technology. You can get back to those lectures if you do not get it specifically over here. So let's discuss the formulation related factors in detail. The first formulation related factor is drug. What other kinds of factors which are associated with drug are free acid, free base and salt form, particle size, and so on and so forth. So we'll be discussing each and every factor in detail one by one. Let's start with free acid, free base and salt form. Sodium salts of weak acids or hydrochloride salts of weak bases can cause marked increase in aqueous solubility when compared to the corresponding free acids or bases. This is attributed to an increase in interactions between drug and water, giving rise to a greater degree of ionic dissociation of the drug when it dissolves in water. An example of this effect is the aqueous solubilities of salicylic acid and its sodium salt, which are 1:550 and 1:1 respectively. सोडियम सॉल्ट्स वीक एसिड के और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स वीक बेसिस के एक्वस सॉल्युबिलिटी को मार्केडली इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं फ्री एसिड्स या फ्री बेसिस से, इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्री एसिड्स या कॉरस्पॉन्डिंग फ्री बेसिस के साथ। सॉल्ट फॉर्मेशन में इंटरैक्शंस बढ़ जाते हैं बिटवीन ड्रग एंड वाटर। ये बढ़े हुए इंटरैक्शन ग्रेटर डिग्री ऑफ आयनिक डिसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं वाटर के अंदर, और ड्रग जल्दी डिज़ोल्व होती है वाटर में। इसकी एग्ज़ाम्पल एक्वस सॉल्युबिलिटी है सैलिसाइलिक एसिड की और इसकी सोडियम सॉल्ट की। सैलिसाइलिक एसिड विदाउट इट्स सॉल्ट फॉर्म सिर्फ सॉल्युबिलिटी रखता है 1:550 के प्रोपोर्शन में वाटर में, लेकिन जब सैलिसाइलिक एसिड अपनी सॉल्ट फॉर्म के साथ डिलीवर किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी 1:1 हो जाती है, यानी एक्वस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और एक्वस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ है जब सैलिसाइलिक एसिड अलोन प्रेजेंट है। द सेकेंड फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू ड्रग इज़ पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग. The most common approach for improving the dissolution rate of the drug from rapid release granules is to increase the surface area available for dissolution, and this is often achieved by employing finely divided particles. Size reduction has also been shown to decrease the diffusion boundary layer of the sparingly soluble drugs. Hence, the combined effect of A and H improve the dissolution rate of the drug. एक और कॉमन अप्रोच है डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस करने के लिए इन केस ऑफ रैपिड रिलीज ग्रैन्यूल्स के अंदर कि हम सरफेस एरिया बढ़ा दें ड्रग का। जो सरफेस एरिया डिसोल्यूशन के लिए अवेलेबल है उस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दें। ये मोस्टली सरफेस एरिया हम उस वक्त बढ़ा सकते हैं जब हम ड्रग को फाइन पार्टिकल साइज़ के अंदर कन्वर्ट कर दें या ड्रग को माइक्रोनाइज्ड फॉर्म के अंदर डिलीवर करें। साइज़ रिडक्शन एक्चुअली डिफ्यूजन बाउंड्री लेयर को डिक्रीज़ कर देती है स्पेरिंगली सॉल्युबल ड्रग्स की, तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है और डिफ्यूजन बाउंड्री लेयर या थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर जो सॉल्युबलाइजेशन कर रही है, डिसोल्यूशन कर रही है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कंबाइंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये कंबाइंड इफ़ेक्ट्स डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रूव करता है।
Glycopulvin represents a classical example of a drug where improvement in rate of absorption can be brought about by an increase in resolution rate due to the increase in surface area by size reduction. This drug, which was initially marketed as coarse particles, resulted in many cases of therapeutic failure due to low bioavailability. Ramal et al. Demonstrated that 0.5 gram of micronized riboflavin produced the same serum level as 1 gram of the unmicronized form. Subsequently, the use of micronized riboflavin enabled a dosage reduction and contributed not only to lower drug cost to the patient but more importantly a decrease in therapeutic failures caused by poor absorption. पार्टिकल साइज रिडक्शन की में सरफेस एरिया बढ़ाने की और डिफ्यूजन बाउंड्री लेयर को डिक्रीज़ करने की एक एग्जांपल ग्लाइसोफल्विन है. क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें इम्प्रूवमेंट इन रेट एब्जॉर्प्शन की गई बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स. ये ड्रग इनिशियली मार्केटेड की गई थी कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में, लेकिन कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में थेरेप्यूटिक फेलियर्स अचीव हुए बिकॉज कोर्स पार्टिकल्स लोअर बायोअवेलेबिलिटी शो कर रहे थे. ग्राम एट अल ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि 0.5 ग्राम माइक्रोनाइज्ड ग्लाइसोफल्विन सेम सीरम लेवल प्रोड्यूस करती है जितना कि 1 ग्राम अनमाइक्रोनाइज्ड फॉर्म करती है. सो यूज़ माइक्रोनाइज्ड ग्लाइसोफल्विन का डोजेज रिडक्शन में आया. इससे पेशेंट कंप्लाइंस इंक्रीज़ हुई और ड्रग की कॉस्ट डिक्रीज़ हुई. ड्रग की कॉस्ट डिक्रीज़ होना ही एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लाइंस इंक्रीज़ हुई. सेकेंडली, थेरेप्यूटिक फेलियर जो अनमाइक्रोनाइज्ड फॉर्म की वजह से ऑब्जर्व हो रहे थे उसको प्रिवेंट किया गया. Size reduction has its practical limits as micronized particles tend to aggregate due to the high surface energy per unit mass. Aggregation reduces the surface area available for dissolution and lowered the drug dissolution rate. Wetting effect is particularly important under such a condition as it increases the effective surface area. There are several micronization techniques available and they can be broadly classified into mechanical and solution based micronization. Size reduction का एक पोटेंशियल लिमिट है कि माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल्स एग्रीगेशन जल्दी कर लेते हैं. एग्रीगेशन करने का रीज़न उनकी हाई सरफेस एनर्जी होती है जो पर यूनिट मास अवेलेबल है. एग्रीगेशन सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है जो डिसोल्यूशन रेट के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया होता है. इन टर्न ड्रग का डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज़ हो जाता है. वेटिंग इफ़ेक्ट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है इस तरह की कंडीशन में सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए. और इस वेटिंग इफ़ेक्ट को हम अचीव कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग इंटरैक्टिव मिक्सचर्स. सेवरल मेथड्स ऑफ माइक्रोनाइजेशन अवेलेबल हैं और इनको हम दो तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर सकते हैं. देयर आर मैकेनिकल बेस्ड माइक्रोनाइजेशन मेथड्स एंड सॉल्यूशन बेस्ड माइक्रोनाइजेशन मेथड्स. Mechanical based micronization methods include classification and comminution, and solution based micronization methods include crystallization, spray drying and spray freezing. Interactive mixtures. The concept of interactive mixing was first introduced by Hersey to describe the mixing of fine and cohesive particles. This form of mixing is different from random mixing because of the addition of fines to coarser particles. The addition may be due to many factors such as humidity, adsorption, chemisorption, surface tension, friction, and electrostatic forces, unlike random mixing where gravitational force predominates over the other types of addition forces. Interactive mixtures could be viewed as miniature granules since the fine drug
and coarse particles exist as agglomerates. The force of adhesion can be so great that it is able to resist the fluidization force in a fluid bed, thus facilitating the coating of miniature granules. इंटरैक्टिव मिक्सचर्स बनाने से हम एग्रीगेशन की इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. इंटरैक्टिव मिक्सचर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था हर्सी ने, और ये डिस्क्राइब करता है कि फाइन पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल्स की कोहेसिव पार्टिकल्स की मिक्सिंग एक साथ हो सकती है. इस तरह की मिक्सिंग डिफरेंट है रैंडम मिक्सिंग से, बिकॉज इस तरह की मिक्सिंग के अंदर फाइन पार्टिकल्स एडिशन करते हैं कोर्सर पार्टिकल्स के ऊपर. एडिशन जो कोर्सर पार्टिकल्स के ऊपर फाइन पार्टिकल्स की हो रही है वो पॉसिबली बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जिनमें ह्यूमिडिटी, एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस शामिल हैं. रैंडम मिक्सिंग के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रीडोमिनेट करती है, लेकिन इंटरैक्टिव मिक्सिंग के अंदर ये तमाम फोर्सेस जैसे कि ह्यूमिडिटी, एड्जॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रीडोमिनेट करती हैं. इंटरैक्टिव मिक्सचर्स को हम मिनिएचर ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर फाइन ड्रग कोर्सर पार्टिकल्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एन एग्लोमेरेट. जो फोर्स ऑफ एडिशन है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो रेजिस्ट करती है फ्लूइडाइजेशन फोर्स को फ्लूइड बेड के अंदर. इसी वजह से मिनिएचर ग्रैन्यूल्स की कोटिंग आसान होती है और कोटिंग इफ़ेक्टिव होती है. The basic mechanism in enhancing the dissolution rate of poorly water-soluble drug in an interactive mixture is by reduction of drug aggregates upon mixing with highly soluble and coarser carrier particles, thus improving the wettability of the micronized drug. By adding carrier particles, fine drug particles will adhere onto the coarse carrier particles, thereby increasing the exposed surface area for drug dissolution upon rapid concomitant dissolution of the carrier into the dissolution medium. Thus, the solubility of the coarser carrier particles plays an important role in the dissolution of the adhered drug. The use of carrier having surface active properties will further improve the dissolution rate of the drug by solubilization effect during dissolution. तो बेसिक मेकानिज़म इन्वॉल्व है डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस करने के लिए, स्पेसिफिकली उन ड्रग्स की जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं और जिन्हें इंटरैक्टिव मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, वो ड्रग एग्रीगेट्स को रिड्यूस करके, यानी ड्रग के एग्रीगेट्स जो कोर्सर पार्टिकल्स के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं उनकी रिडक्शन है. कोर्सर पार्टिकल्स की रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं हाईली सॉल्युबल कोर्स कैरियर पार्टिकल्स, जो एक्चुअली वेटेबिलिटी इम्प्रूव करते हैं माइक्रोनाइज्ड ड्रग की. कैरियर पार्टिकल्स की एडिशन से फाइन ड्रग पार्टिकल्स एडहेयर करते हैं कोर्सर कैरियर पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक्सपोज सरफेस एरिया ड्रग का इंक्रीज़ हो जाता है फॉर डिसोल्यूशन. वो रैपिड डिसोल्यूशन होती है कैरियर पार्टिकल की डिसोल्यूशन मीडियम में, जिसकी वजह से जो ड्रग एडहेयर है कैरियर पार्टिकल के ऊपर उसका सरफेस एरिया डिसोल्यूशन के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा, देयर बाय इनकी डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी कैरियर पार्टिकल्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसोल्यूशन ऑफ द एडहेयर ड्रग में. सो हम ऐसे कैरियर पार्टिकल्स यूटिलाइज़ करते हैं जिनकी सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं डिसोल्यूशन रेट में, और ड्रग के डिसोल्यूशन या सॉल्युबलाइजेशन इफ़ेक्ट करती हैं या इन्हांस करती हैं ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. The third drug-related factor is the drug form, that is either polymorphic or solvate form. Drugs can exist in one or more crystalline forms. The term crystalline implies that the structural unit known as the unit cells
are repeated regularly and indefinitely in three-dimensional space. Crystalline forms of a drug can be further classified into polymorphs and solvates, also known as pseudopolymorphs. Crystalline polymorphs have the same chemical composition but different crystal structures because of the manner in which the molecules arrange themselves in crystal lattice during crystallization. Solvates are the crystalline forms containing solvent molecules in the crystal structure in stoichiometric or non-stoichiometric proportion. The differences in crystal packing of the polymorph and solvates would mean that they differ in lattice energy and entropy, thereby significantly affecting physicochemical properties, one of which is the solubility of the drug. ड्रग एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है. क्रिस्टलाइन की टर्म ये इम्प्लाई करती है कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिनको हम यूनिट सेल्स कहते हैं, ये रिपीटेड यूनिट्स हैं और रेगुलरली या इंडेफिनेटली थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ड्रग्स की फर्दर क्लासीफाई हो सकती हैं इनटू पॉलीमॉर्फ्स या फिर सॉल्वेट्स में. सॉल्वेट्स को सूडो पॉलीमॉर्फ्स भी कहते हैं. क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ्स में सेम केमिकल कंपोजिशन होती है लेकिन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का रीज़न मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल लैटिस के अंदर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन. सॉल्वेट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है ईदर इन स्टाइशोमेट्रिक और नॉन स्टाइशोमेट्रिक प्रोपोर्शंस. डिफरेंस जो क्रिस्टल पैकिंग के अंदर है पॉलीमॉर्फिज्म में या सॉल्वेट्स में, ये डिफ़र करता है लेटिस एनर्जी और एंट्रोपी को. और ये लेटिस एनर्जी और एंट्रोपी का डिफरेंस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें मेन प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग है. This implied that the dissolution and absorption of a poorly water-soluble drug may also be affected by the actual polymorphs or solvates present in the oral dosage forms. Usually only one stable polymorph exists for a given set of environmental conditions. In terms of enhancing dissolution, it is better to employ metastable polymorphs of the drug. However, in processing, it is a manufacturer's nightmare as the use of metastable polymorphs may lead to stability problems on storage unless a way is found to stabilize the polymorph. Hence, it is always desirable to choose the most soluble and stable form of the drug during the initial stages of the product development. Dissolution और एब्जॉर्प्शन पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की वजह से अफेक्टेड होती है, स्पेसिफिकली जब ये पॉलीमॉर्फिक या सॉल्वेट फॉर्म्स ओरल डोजेज फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करके दी जा रही हैं. यूजुअली एक स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है किसी भी गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में. अगर हम डिसोल्यूशन एनहांसमेंट की बात करें तो मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ड्रग ज़्यादा अच्छी डिसोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन प्रोसेसिंग के अंदर मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स अराइज करती है जो फर्दर ड्रग की स्टेबिलिटी या स्टोरेज में प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं. इसी वजह से ज़्यादा डिज़ायरेबल ये होता है कि अच्छी सॉल्युबिलिटी वाली ड्रग्स विद बेटर स्टेबिलिटी चूज़ की जाए इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ताकि फर्दर स्टोरेज रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें. The fourth and the last factor which affects the dissolution, which is related to drug, is its amorphous state. Amorphous state can be defined with reference to crystalline solid. It is similar to crystalline solid as an amorphous solid has short range molecular arrangement with neighboring molecules, but unlike crystalline solid, an amorphous solid has no long range order of molecular packing.
The major interest in amorphous solids is in their higher solubilities and dissolution properties, as well as better compressibility as compared to the crystalline forms. However, amorphous solids are generally not as stable physically and chemically. एमॉर्फस स्टेट को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं विद रेफरेंस टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम ये कहते हैं कि सिमिलर है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, लेकिन इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होती हैं। एमॉर्फस सॉलिड में लॉन्ग रेंज या मॉलिक्यूलर पैकिंग एब्सेंट होती है। मेजर इंटरेस्ट एमॉर्फस सॉलिड में इनकी हायर सॉलिबिलिटीज़ और डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज़ है, जो एक्चुअली बेटर कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है और व्हेन दे आर कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स स्टेबल नहीं होते फिजिकली और केमिकली व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द ड्रग। So this was all from this lecture. We will be continuing the resolution related factor specifically related to formulation, and we'll be discussing additives in the next class. Till then, post all your questions and queries on HULMS, or you can discuss your questions on your official WhatsApp group as well. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.